So and दिस प्रोडक्ट इज़ ओपन। और ओपन करने के बाद जहमत भी नहीं समझी कि इसको अच्छे से जो है ना वो रीपैक भी कर दिया। iPhone X इसको मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे रखता हूँ एंड सी स्टार्ट चार्जर और योर एप्पल एयरपोर्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हारिस उस्मानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी अनबॉक्सिंग। और इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू अनबॉक्स वन मोर प्रोडक्ट विच इज़ हेयर एंड दिस प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली सेंड टू अस बाय shopastar.com। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा एंड में, बट थैंक यू सो मच shopastar.com। उससे पहले those who are new at this channel, go and subscribe my YouTube channel, and when you go to my channel you will see the list of the channel. Go and subscribe all the channels. So stop talking and इसको unbox करने से पहले I have to tell you something about the Pakistan custom which is this slip. सो ये स्लिप के ऊपर कुछ अमाउंट मेंशन हुई है विच इज़ लाइक हेयर 500 रुपीज़, यहाँ पे 15 रुपीज़ एंड देन 30 रुपीज़। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रीपैकिंग चार्जेस विच इज़ 15 रुपीज़ एंड देन पोस्टल फी इज़ 30 रुपीज़, बट आई हैव नो आइडिया वाई 500 रुपीज़ इज़ मैंशनड हियर और 800 रुपीज़। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास पहुंचा है और स्टिल नॉट ओपन प्रोडक्ट। यू कैन सी वेरी गुड कंडीशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड बट देयर आर सम इश्यूज विद दिस प्रोडक्ट जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर वन, व्हाट इज़ दिस, व्हाई दिस इज़ एक्चुअली विद द प्रोडक्ट, आई हैव नो आइडिया। द प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ एक्चुअली $24 विद द शिपिंग $4 एंड ये मुझे यहाँ पे पड़ा है लाइक $29 का, जो कि मेरी अमाउंट पे की है shopastar.com ने, ठीक है। बट इन एडिशन टू दैट अमाउंट ये वाली जो अमाउंट है ये मैंने पे की है विच इज़ एक्चुअली फॉर द पाकिस्तान कस्टम। और दैट मीन्स हाउ डू दे नो कि व्हाट इज़ इनसाइड दिस प्रोडक्ट। माई क्वेश्चन इज, डू दे ओपन द प्रोडक्ट, इज इट लीगल or not? I have no idea, but it said repacking charges which is 15 rupees. That means they opened my product. So if it is legal, no issue. If it is not legal, then there is a issue. So तो पाकिस्तान कस्टम जो लोग भी देख रहे हैं, तो ये वीडियो आई एम गोइंग टू पुट दिस ऑन 2 चैनल। वन इज़ पाकिस्तानी अनबॉक्सिंग एंड द अदर इज़ हारिस उस्मानी व्लॉग्स फूडीज, जो कि मेरा मेन चैनल है। करना ये होगा, एक अनबॉक्सिंग तो होती रहेगी, बट एक और चीज़, एक स्टिकर नज़र आ रहा है आपको और इसके ऊपर लिखा हुआ है फ़ोन होल्डर एंड बिसाइड दैट स्टिकर यू कैन सी अनदर स्टिकर। सो वो अनदर स्टिकर क्या है, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक ये जो है ना, अगर इसको मैं क्लोजली दिखाऊं कि स्टिकर्स जो है ना ओवरलैप हुए हैं, डेट मीन्स के जो ऊपर वाला स्टिकर है इज़ फ्रॉम द पाकिस्तान कस्टम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट देयर इज़ अ चांस कि गलत प्रिंट हो गया हो और सिंगापुर से ही दूसरा स्टिकर लगा दिया गया हो। अनदर प्रॉब्लम हियर इज़ द अमाउंट विच इज़ एक्चुअली मैंशनड हेयर विच इज़ $17, ठीक है ना। एंड द डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो लिखा है विच इज़ फ़ोन होल्डर, बट आई नो व्हाट इज़ इनसाइड दिस बॉक्स, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा, आई विल टेल यू इन अ बिट। सो I have no idea what is going on with this scenario, so I am totally confused with this thing। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, so let me just open this और इसको ओपन करते हैं and then you can see the product। So it's a bubble wrap which is a very good packaging। So and this product is open। मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने ओपन किया है और ओपन करने के बाद जहमत भी नहीं समझी कि इसको अच्छे से जो है ना वो रीपैक भी कर दिया। सो दिस इज़ प्रॉपरली टेयर्ड अप और देयर इज़ नो टेप इन्वॉल्व, स्ट्रेट अवे ओपन प्रोडक्ट। ओ माई गॉड, यू कैन सी द केबल एज वेल विच इज़ एक्चुअली जो है ना हैंड मूवमेंट की हुई है, लाइक उसको घुमाया हुआ है हैंड मूवमेंट, इफ़ यू कैन सी दैट। और वन मोर थिंग, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे एंड ये स्लिप को भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे, बट देयर इज़ अ इशू। 3-in-1 फास्ट चार्जर, ठीक है ना, परफेक्ट हो गया। यू कैन सी द कलर विच इज़ मैंशनड हियर विच इज़ वाइट, बट द केबल इज़ इन ब्लैक। आई डोंट नो व्हाई दिस केबल इज़ इन ब्लैक। This has to be in white color because I'm very
डिस्टर्ब विद द पैकेजिंग। इसमें वेबसाइट की कोई गलती नहीं है। आई एम अगेन सेइंग दिस कि उन्होंने, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ एक्चुअली फॉलिंग अपार्ट। दिस इज़ द बॉक्स and you can see a very bad condition of this box, but very important यहाँ पे जो है ना information है, which is like इसका जो input है 5 watt/2 ampere, 9 watt/2 ampere, output for watches is 2 watt, output for earphone is 3 watt, and output for cellular phone is 5 watt, 7.5 and 10 watt। यही वो information है जो कि बहुत important है। But let's see, all the thing is in white except this cable. This cable is in black. You have this user manual. Always read that manual, which is quite handy. And then you have a product here. Simple unboxing. A disclaimer: I am not any professional. I am just a YouTuber और जो कि वीडियो में unbox करता है। I have no idea with the information and technicalities with the product. मैं सिर्फ अपने viewing pleasure के लिए ये करता हूँ और दूसरों के लिए करता हूँ कि उन तक information पहुँच जाए कि किस तरह से जो product है वो अंदर से नज़र आ रहा है, कैसी build quality है और कैसे ये function कर रहा है। So the basic information which I provided to you is on the box. वो मैंने आपको दिखा भी दिया। And my biggest concern is this cable, and it's actually a type C cable. You can see that. You can also see the pin which is dedicated for the Apple, and this is the platform where you can put your mobile and start wireless charging, and this is the place where you put your Apple Watch and it will start charging wirelessly, and it's a fast charger. This is the charger dock which is I think also opened. I am highly disappointed with the Pakistan custom. उन्होंने जो भी किया, I don't know पाकिस्तान कस्टम ने किया है, जिसने भी किया आया तो पाकिस्तान कस्टम और पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू है। और ये देखें, और ये इतना टेढ़ा हुआ है। You can also see the fingerprint on it. Oh my god, that is creepy. And you can also see the finger mark, or I don't know what kind of mark, has to be like very clean. I don't know about the hygiene factor, but this is, I think this is the new charger and a dedicated one. ठीक है जी, this is a quick charger 3.0 cable and a product. And you can also see the information which is like upside down. You can see the information 3-in-1 fast charger, all the information mentioned here. One more thing, this product is from the AliExpress. AliExpress से आया है यहाँ पाकिस्तान कस्टम पे, and then पाकिस्तान कस्टम पे इसके साथ जो भी कुछ हुआ, I have no idea क्या हुआ कैसे हुआ, but I am highly disappointed. But thank you so much shopastar.com for sending me this product. Thank you so much shopastar.com for sponsoring this video and giving me money to buy this product from AliExpress and do the unboxing. Though in this video I'm going to be giving away this product to the person who is going to like this video, share this video, and also comment के ऊपर आके अपना Twitter handle share करे, and we will give a random person this product. I'm not going to use that one, but I will also show you how it works. So I have to unwrap or untangle this wire. This is normally I think a 1 meter wire, so you have to do this, and there is a point where you can plug this in. So I am going to plug this in the socket and let's see कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको मैंने यहाँ पे plug in कर दिया है, and then I have here iPhone X. इसको मैं straight away यहाँ पे रखता हूँ and see start charging 95% के ऊपर इसकी चार्जिंग है, और ये फास्ट चार्जर है तो देखना होगा कितनी देर में चार्ज करता है। देन यहाँ पे मेरे पास एयरबड्स भी हैं, यानी एयरपॉड, तो उसको मैंने यहाँ पे फिक्स किया, और यू कैन स्ट्रेट अवे सी लाइट ब्लिंक कर रही है ग्रीन कलर की, एंड देयर आर योर एप्पल एयरपॉड। उसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है, सो लेट्स सी कितनी देर में चार्ज हो जाता है। सो इट्स अ फास्ट चार्जर। आई होप कि जल्दी से चार्ज कर देगा मोबाइल को। तो जब तक ये चार्ज कर रहा है, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी अनबॉक्सिंग एंड हारिस उस्मानी व्लॉग्स फूडीज, दोनों को जाएं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन, एंड व्हेन यू गो टू माय चैनल यू विल सी द लिस्ट ऑफ द चैनल। गो एंड सब्सक्राइब ऑल द चैनल। वो सारे मेरे ही चैनल है, फूड से रिलेटेड है, अनबॉक्सिंग से रिलेटेड है, फूड ASMR है, फूड मुकबैंग है, सारी चीजें इसके अंदर है। सो इन द एंड वन मोर थिंग, इन द एंड थैंक यू सो मच shopastar.com फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। आई होप हमारा और आपका रिश्ता इसी तरह से बना रहेगा, और विल सी इन फ्यूचर मोर वीडियोस विद द कोलैबोरेशन। देख रहे होगा कि कितने लोग आके नीचे कमेंट करते हैं, क्योंकि एक बंदे को ये प्रोडक्ट जाएगा एज अ गिव अवे। तो अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।